Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on another session of this MA Capsule where we will be discussing questions based on your PYQs as well as some questions which I personally set for your PG exam. So yesterday we took one session and someone commented on the Cecil D. Lewis question. So hey Anuradha, and it may happen that due to something I said 16th century, but obviously it was not 16th century. All right, okay, last but not the least, I hope that you enjoyed the yesterday's session, and yes, let's get started. All right, so let's see who are there. All right, so okay, so we have got some students. Hello everyone, good morning to all of you. So excited to teach you today also. Let's get started. So today we have yet another 30 questions and we will be discussing again by discussing something detailed related to your exam. Okay, if you have any queries you can tell me in the comment section. Okay, so as you know, you will be getting 100 questions. The total time will be given 120 minutes. The total marks that you will be getting will be 400. And if you do some question wrong, then you will be getting -1 as the negative marking. So 4 marks each question. If we talk about the pattern, so it will have part 1 and part 2. Part 1 will be concerning 25 questions and your domain subject will have 75 questions. Now, if we talk about our motto, so our motto is to get you 248 plus marks out of 300 and then 62 plus questions out of 75. I understand that it's a little bit high, but if you revise properly, then definitely you are going to crack it with very good marks. All right, so yes, now we will move to the questions. Okay, hello Simran, so happy to see you here. Okay, so students are now coming. Hello and good morning to everyone. Okay, let's start the questions. H. Wells' novel, here you understand that it is written for Mr. H.G. Wells. Wells' novel, The Invisible Man, The War of the World and The First Man on the Moon are what kinds of novel? These are realistic novels, works of utopian fiction, scientific romances or detective novels. Good morning Balu, good morning Sakshi, good morning Smiley. All right, so yes, let's start answering. Okay, 2 of you have answered. Quickly everyone. I need all of you to participate in this. Okay, so all of you. Okay, Sakshi is saying works of utopian fiction. Bacha, do you know what is utopian fiction? All right, who will tell me what is an utopian fiction? Fiction means you understand that it is your creation has made this work. तो उसे हम कहते हैं fiction, काल्पनिक कोई कहानी लिखना. और यूटोपिया मतलब क्या होता है? एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड की कल्पना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता. तो आई अंडरस्टैंड आपने ऐसा क्यों बोला होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये नॉवेल्स हैं they are talking about something which is not real. So I understand your concern, but it is the main theme that it has is the scientific romance. Okay, so this is scientific romance. Here the option number C is right. Yes, imaginary land and nowhere. Also Sakshi and all of you, I hope that you know what is dystopian novel. ओके, यूटोपियन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिस्टोपियन. अगेन जहाँ पर हम किसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, बट दैट रिफर्स टू ऑल द नेगेटिव थिंग्स एंड वेयर इज यूटोपिया में सब अच्छा होता है, ऐसा लोग लिखते हैं. देयर इज़ वन वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ utopian fiction. I hope that you are able to answer or not in the comment section.
like the most famous example. What is the most famous example of utopian literature that you can remember? Okay. Moving on to the next question. Ernest Hemingway was awarded the Nobel Prize in the year. So in which year Ernest Hemingway was awarded the, yes, Utopia by Thomas More. It is the most asked and most important question of utopian literature. Alright, so moving on to the options, we have 1915, 1928, 1936 and 1954. Simran is saying 1954. Let's see what others have to say. Yes, Malik, Sakshi, Smiley, Ankanvi, we need all of you to answer here. Balu, Smiley. Answer fast. We don't have that much time. अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का मारो, but at least answer and participate in this. Okay, so yes, actually you are correct, Simran and Smiley. It is 1954. Option number D is the right option. You all have answered correctly. Congratulations to you all. Okay, so moving on to the next question, we have, to judge of poets is only the faculty of poets. Okay, to judge of poets is only the faculty of poets and not of all poets but the best. ये किसकी विचार है, ठीक है? So we have this question and we have options as first Philip Sidney, then we have Ben Jonson, after that we have Dryden, last but not the least we have Alexander Pope. Thank you, Neha. So happy to see that you all are able to understand. But now answer me. Okay, good morning. Good morning, everyone. Answer fast. Good morning, Shivansh. Happy to see you. I think you were not there yesterday. Okay, so Malik is saying Philip Sidney. I understand that this is a kind of thoda sa tough question, but at least answer. Okay, Smiley is saying Ben Jonson. Okay, it's a war between A and B. Students, answer fast. Okay, so again it's a war between A and B, and here the ones with B win. This is Ben Jonson. Alright students. अच्छा, Ben Jonson के अगर आप वर्क्स याद करें तो वैसे तो इनके सारे फेमस वर्क्स हैं, पर इन्होंने 2 ट्रेजेडी लिखी हैं और वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन 2 के नाम आप हमेशा याद रखिएगा. एंड फुल नाम मैंने पिछले सेशन में भी बताया था. One is Sejaunus the Fall and the second is Catiline the Conspiracy. तो ये 2 ट्रेजेडीज बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हैं, इन्हें याद रखिएगा. When it comes to Dryden, तो इन्होंने जो क्रिटिकल वर्क लिखा है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसे प्लीज़ याद रखिएगा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फिलिप सिडनी, तो स्टूडेंट्स फिलिप सिडनी का जो वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड जिन्हें वो प्यार किया करते थे, लेडी पेनेलोप आई गेस, तो ही वांटेड टू मैरी एंड कुडंट मैरी, तो उनके लिए लिखा था, जहाँ पर वो खुद को बताते हैं एस्ट्रोफिल मीन्स स्टार लवर और स्टेला मीन्स स्टार, एस से स्टेला, एस से स्टार. ओके, नाउ अलेक्जेंडर पोप. तो अलेक्जेंडर पोप का आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जानते ही हैं, विच इज़ द रेप ऑफ द लॉक. ओके, तो जो राइटर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड थोड़ा बहुत डिटेल आपको याद रखना है. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज अ कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स बाय. कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये जो है ये कलेक्शन है, ठीक है. इट इज़ अ कलेक्शन बाय चार्ल्स लैम, एस टी कॉलरिज,
William Hazlitt or A.C. Bradley? Students, answer fast. Okay, you all are saying A. Okay. Okay. So actually students, this channel, the one who is commenting, ma'am, you have very commendable knowledge of English literature, is actually made by one of my friend. He is here for the subscription. Okay, please do subscribe to his channel. All right. All right, let's see what you are answering. Okay, all of you are saying A, that means Charles Lamb. But no, students, here the right answer is William Hazlitt. William Hazlitt has written this collection, The Characters of Shakespeare's Plays. Okay. Okay, so moving on to the next question, we have the phrase. It is an important question, students. The phrase theatre of the absurd was invented by John Osborne, Samuel Beckett, Harold Pinter or Martin Esslin. This is an easy question actually, but has asked many a times. So please answer, students. Okay, what could be the answer? Answer fast. Okay, Martin Esslin. Ankan is saying Martin Esslin. Let's see what others have to say. Okay, Varsha is saying Harold Pinter. All right, Tastu. Okay, Ronit is saying Harold Pinter. Balu is saying Samuel Beckett. Okay, students, so listen here carefully. The theatre of the absurd, this term was invented, this phrase was invented by Martin Esslin. ठीक है, आपको ये याद रखना है as one of the important questions. Okay, it is actually important. All right, moving on to the next question we have. He never take liberties with historical facts as Shakespeare does. So you understand, this is someone who criticized Shakespeare. So he never takes liberties with historical facts as Shakespeare does, but is accurate to the smallest details. ठीक है, ये किसके बारे में कहा गया है? जैसे शेक्सपियर क्या करते थे, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्क्स लिख दिया करते थे. ओके, सो यू ऑल इवन हैव स्टार्टेड आंसरिंग, आई सी. ओके, तो शेक्सपियर क्या करते थे, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लिबर्टी ले लेते थे. जैसे अगर आप देखो तो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन भी होता है, बट उन्होंने उसका ध्यान हमेशा नहीं रखा अपने वर्क्स में. ठीक है, तो कोई और थे जो शेक्सपियर की तरह लिबर्टी नहीं लेते थे और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिटेल का ध्यान रखते थे. सो हु इज़ दैट पर्सन? इज इट मार्लो, बेन जॉनसन, वेबस्टर और बियोमोंट एंड बियोमोंट? ओके, आंसर फास्ट. सम ऑफ यू आर सेइंग बी. ओके, वेलकम संगीता. ओके, answer fast, students. Okay, welcome Ayushi. I did not see you yesterday, I think. Thank you, Shivansh. Actually, I'm feeling very happy that at least here on this platform I'm able to interact with you all. If you have any kind of query or confusion, you can tell me. And if there is something specific that you want to learn, then also you can tell me. Okay, so most of you are saying Ben Jonson, and yes, the right answer is also Ben Jonson. Ben Jonson अपने वर्क्स में छोटी से छोटी डिटेल का, इवन द यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, एंड शेक्सपियर की तरह लिबर्टीज़ भी नहीं लेते थे. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड अबाउट हिम.
All right, Ayushi, but I'm happy to see you today. Please come every day. We teach this way daily. We have just started from yesterday. Okay, so next question we have. He never. Okay, we have just completed this question, I guess. Yes. Moving on to the next question we have. Yes, moving on to the next question we have. What is the real name of George Eliot? Such an easy question, students. I want all of you to answer on this. So we have Mary Ann Evans, Mary Wollstonecraft, or none of these. Okay, most of you are saying A, Mary Ann Evans. Good morning, Manoj. Yes, and actually this is the right answer. But here I have a question for you. Tell me that what is the name of the most famous work that was written by. Okay, you must. Okay, चलिए इतना याद रख लीजिए. आपको पता होगा कि फेमिनिज्म की वेव्स आई थी, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी, ठीक है, जिसमें फीमेल राइटर्स ने अलग अलग वर्क्स लिखे थे. जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी उसमें मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट को रखा जाता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है. सो ये आप याद रखिएगा. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो यस, मैरी एन इवांस इज़ द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the marriage of heaven and hell. Again, a very important yet an easy question. The marriage of heaven and hell is a poem by Shelley, William Blake, Leigh Hunt, and none of these. Let's see how many of you are able to answer. Okay. Welcome, Gayatri. I think you were not there yesterday. Okay, so most of you are answering B. Good morning, Vijaya. I think you were also not there yesterday. Okay, attend the sessions. These are for you only. Yes, so the right answer is William Blake. Moving on to the. Okay, Varsha. So happy to see that you are preparing from now only. ठीक है. Next question we have. They were a plain people faced with the task of subduing a wilderness. About whom has this been said? ये जो कथन है ये किसके बारे में कहा गया है? Okay, Vijaya, you were there. Okay, happy to know that. ठीक है. So Negroes, Red Indians, Puritans, or the early settlers in America. So if we talk about from your exam point of view, तो ये कोई बहुत important question नहीं है. Still अगर आपको नहीं पता है तो आप तुक्के मार सकते हो. Just कोई भी आंसर करिए. आपका एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक? Okay, Ayushi is saying D, Varsha is saying B, Balu again is saying D. Ankan is also saying D. ओके, चलिए सब लोग आंसर करिए. जिन्हें नहीं आता वो तुक्के लगाइए. समृद्धि, आई थिंक यू वर नॉट देयर yesterday. गुड मॉर्निंग टू यू. मे बी Negroes. Smiley is saying B. Okay, students, so here the right answer is early settlers in America. Congratulations to the ones जिनके तुक्के सही हो गए या जिन्हें पता था. बट आई एम प्राउड ऑफ द वंस जिन्होंने अटेम्प्ट किया ना जानते हुए भी, बिकॉज अटेम्प्टिंग समथिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप जितना अटेम्प्ट करोगे आपको उतना याद रहेगा कि हाँ क्लास में वो क्वेश्चन गलत हुआ था तो ये राइट आंसर होगा. अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, अगर आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होगे तो आपको चीज़ें उतने अच्छे से नहीं याद रहेंगी. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ द वंस हु आर आंसरिंग. All right, so moving on to the next question, we have the first complete English translation of the Bible was made by. It is an easy but a confusing.
बट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ईजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज बाइबल ट्रांसलेशंस बहुत लोगों ने किए हैं. सो एज ऑप्शंस वी हैव विलियम टिंडेल, माइल्स कवरडेल, जॉन वाइक्लिफ, विलियम लैंगलैंड. ओके, Ankan is C. There is, I told you it's a confusing question. Okay, why? Because अगर हम विलियम लैंगलैंड को थोड़ा साइड कर दें तो इन तीनों ने ही बाइबल पर काम किया है. ठीक है, अब आपको इसमें ये बताना है कि पहला कंप्लीट ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था. Okay, so it's a war between A and C. Okay, but the right answer here is जॉन वाइक्लिफ. ओके, सो जिनका भी गलत हुआ है प्लीज़ वो इसे नोट डाउन कर लें, बिकॉज इट वॉज रियली अ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन. काफ़ी बार एग्जाम में बच्चे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ वाई आई इंक्लूडेड इट इन द सेशन. देन वी हैव औरोबिंदो घोष, जिनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था. ठीक है, औरोबिंदो घोष, इनका जो वर्क है सावित्री, इट इज़ एन एपिक ऑफ द यूनिवर्स, सोल, माइंड और हेवन. आंसर स्टूडेंट्स, जो भी आपको लगता है आंसर दीजिए. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग soul. Anyone else? Good morning, Vivek. I think you were not there yesterday. Okay, so we have most of you are saying soul, and yes, it is the right answer. Congratulations to all of you. Moving on to the next question, we have Sejaunus. Sejaunus is a dash by Ben Jonson. तो जो लोग इस सेशन के स्टार्टिंग में थे, ओ यस स्माइली, इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन दी महाभारत थियोलॉजी, जिसमें आपने सावित्री की कहानी पक्का सुनी होगी, जो यमराज के पास जाकर अपने पति को वापस ले आती हैं. यहाँ इन्होंने क्या किया है, उसे बहुत ही यौगिक तरीके से लिखा है. सावित्री, ठीक है, विच इज सावित्री, विच इज़ एन एपिक. इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट थियोलॉजिकल कैरेक्टर, but now it's also about those meditations, those yogic cultures and all of that. उन्होंने बहुत ही minute detailing के साथ उसको लेकर फिर अपने तरीके से उसको लिखा है. It feels happy to see that आपको थोड़ा detail knowledge भी है, होना चाहिए. Good morning Vivek. Yes, please continue the session daily. So if we talk about this question, जिन्होंने शुरुआत के questions attend किए होंगे उनसे बन जाएगा. स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था. सो इज इट कॉमेडी, मास्क, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी और पोएटिक प्ले? यस यस, सती सावित्री. ओके, नाउ आंसर स्टूडेंट्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग हिस्टोरिकल tragedy. Yes, historical tragedy is the right answer. I already told you कि बेन जॉनसन ने मेनली 2 ही ट्रेजेडी लिखी हैं. दोनों बार बार आई एम रिपीटिंग, दोनों आपको याद रखनी है. पहली है सिजनस हिज फॉल, दूसरी है कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी. दोनों ही याद रखिएगा, बोथ आर इम्पॉर्टेंट वर्क्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. he was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul. This remark was made about Shakespeare by. It is an important question, students, and we have as options, we have Ben Jonson, John Milton, Dryden or Alexander Pope. Answer, students.
जल्दी जल्दी आंसर करिए. Okay, so most of you are saying, some of you are saying Dryden, whereas some of you are saying Milton. No, Milton did not say it. This comment was made by John Dryden specifically for Shakespeare. So this was said by Shakespeare. All right, students. Moving on to the next question, we have, which of these writers were awarded the Nobel Prize? Which of these writers were awarded the Nobel Prize? Shaw, is it Galsworthy, or is it T.S. Eliot, or all of these? This is an important question and I want all of you to answer here. Okay, yes, Smiley, you are right. Eliot got in 1948. Let's see what others have to say. Answer fast. Answer, students. Okay. Yes, Simran, you are absolutely right. Shivani, you commented that T.S. Eliot got Nobel Prize in 1923. No, I think it was 1948. You can check it. Okay. Okay. Answer fast, students. Okay, okay. Yes, Simran, you're right here. So, you know that George Bernard Shaw, he got the Nobel Prize in 1925. Then Galsworthy got in 1932. T.S. Eliot, he got in 1948. So, the right answer here is all of these. Yes, okay. So please note down जिनके बारे में आपको नहीं पता था कि कब इनको नोबेल प्राइज मिला है. And moving on to the next, we have Murugan. Okay, Murugan the Titler is a novel by, ठीक है, मुरुगन नाम का जो नॉवल है वो किसने लिखा था? R.K. नारायण, राजा राव, के नागराजा और के.एस. वेंकटरमणी. Shivani is saying D. Okay, let's see what others have to say. I understand कि इसका शायद आपको आंसर ना पता हो, बट ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, ठीक है? तो बस आप तुक्के मारिए, फिर देखते हैं किसके तुक्के सही होते हैं. Okay, Ronit is saying Raja Rao. Malik is saying C or D. Sakshi is saying A. Balu is saying C. All right, answer fast, students, ताकि हम डिस्कस कर सकें. D. Okay, so we'll discuss the answer now. It is K.S. Venkataramani. ये एक lawyer थे by profession as well as a writer. Okay, lawyer and writer. You can, I'm not sure, but I think in 1800 and something he born. Okay, he was born in 1800 and something, and in 1900 and something he died. He was a very proficient lawyer and a writer, and mainly he wrote stories on the southern India. Okay,
एक बार इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, दो ही इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कभी कभी आउट ऑफ द लीग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. Okay, moving on to the next we have, who among the undermentioned poets is regarded as the poet's poet? Students, this is really a very important question. We have as options, we have Chaucer, Milton, Edmund Spenser or William Shakespeare. Malik is saying C. Samriddhi, I think you were there, Samriddhi, or you were not present there yesterday. Okay, all right. So most of you are saying C, and yes, the right answer here is Edmund Spenser. Edmund Spenser में आपको याद रखना है कि इन्होंने द फेरी क्वीन लिखा था, जिसके लिए इन्होंने एक अलग टाइप का जो एक लिटरेरी फॉर्म होता है, राइटिंग फॉर्म, द स्पेंसेरियन स्टेंजा, वो इन्होंने इन्वेंट किया था. स्पेंसेरियन स्टेंजा में टोटल 9 लाइंस होती हैं, ये आप याद रखिएगा. जब इन्होंने अपना प्रीफेस लिखा तो ही ऑल्सो रोट अ लेटर, वो लेटर इन्होंने लिखा सर वॉल्टर रले को, और इनका जो वर्क था इट वॉज मेनली डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ. तो ये कुछ बातें हैं अबाउट द पोइट्स पोइट मिस्टर एडमंड स्पेंसर जो आपको याद रखनी है. वेरी गुड मॉर्निंग रिचा, हैप्पी टू सी यू हियर. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव Orwell, means George Orwell's experiences as a police officer in Burma. तो शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि जो जॉर्ज ऑरवेल थे, इन्होंने एज पुलिस ऑफिसर भी वर्क किया था इन बर्मा. ठीक है, एंड उन्होंने वहाँ की जो भी मेमोरीज थी, एक्सपीरियंसेस थे, ही रिकाउंटेड दैम इन सम ऑफ हिज एसेज. ठीक है, जैसे कि मतलब उनकी कौन से ऐसे का नाम है जिसमें उन्होंने अपने बर्मा एक्सपीरियंसेस को लिखा है. लिटरेचर एंड totalitarianism, inside the whale, shooting an elephant or down the mine. Let's see how many of you are able to answer. Answer fast. जल्दी जल्दी सभी आंसर करिए. All right students, so some of you are saying C and a few of you are saying B. तो आपको ऐसे याद रखना है कि एज अ पुलिस ऑफिसर ही वॉज वर्किंग देयर एज अ पुलिस ऑफिसर. और पुलिस क्या करती है? पुलिस शूट्स. सो शूटिंग एन एलिफेंट, इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि उनका कौन सा वर्क था जो उन्होंने बर्मा बेस्ड एक्सपीरियंसेस पर लिखा था, वेयर ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर. ओके, बिकॉज शूटिंग का काम तो पुलिस ही करेगी. ठीक है, अब अगर जॉर्ज ऑरवेल की बात की जाए तो इनके 2 बहुत फेमस वर्क हैं. हु विल टेल मी द नेम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल? All right students, so here the right answer is shooting an elephant, जिसे आप याद कर सकते हैं as he was a police. So police क्या करती है? Shoots. तो shooting an elephant, इससे आपको माइंड में याद रहेगा. अब आप मुझे बताइए, yes, Animal Farm and 1984 are the most important works that were written by Mr. George Orwell. Moving on to the next question we have, who was the editor of Scrutiny? ये क्वेश्चन नेट में, सेट में, गेट में, पीजी में, इवन समटाइम्स यूजी में हज़ारों बार पूछा जा चुका है. मतलब इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इतना रिपीटेड that you must know the answer. Okay, is it T.S. Eliot, F.R. Lewis, Wyndham Lewis or none of these? All right, so some of you are saying F.R. Lewis. Let's see what others have to say as well.
Answer, students. Shivani, Ankan, Manoj, Vijaya, Gayatri, Samriddhi, Simran, Manisha. Manisha, Priyam, good morning. I think that you were not there yesterday. Okay, Ayushi is saying C. No, actually here the right answer is F.R. Lewis. विंडम लीविस नहीं होगा, ठीक है. F.R. Lewis को आपको याद करना है और ये क्वेश्चन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है. All right. So moving on to the next question we have. In his autobiographical novel Sons and Lovers, तो Sons and Lovers किसका autobiographical novel है? मिस्टर D.H. लॉरेंस का, ठीक है. इन द autobiographical novel Sons and Lovers, लॉरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, लॉरेंस ने खुद को कैसे रिप्रेजेंट किया? जैसे जब आप कोई भी वर्क लिखते हैं तो आप उसमें कैरेक्टर्स लिखते हैं, नाम कुछ उनके लिखते हैं. अगर वो ऑटोबायोग्राफिकल है तो खुद का भी आप कोई नाम रखेंगे. जैसे कि चार्ल्स लैम्ब ने एसेज ऑफ इलिया लिखा, उसमें इलिया कौन थे? वो खुद. कज़न ब्रिजिट कौन थी? चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर मैरी लैम्ब. उसी प्रकार से सन्स एंड लवर्स लॉरेंस का क्या है? इनका ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. तो खुद को इन्होंने किस कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया है? इट इज़ विलियम मॉरल, इट इज़ वॉल्टर मॉरल, इज इट पाउल मॉरल और नन ऑफ दीज? All right, Manisha, but I'm happy to see you here. Now participate in every question, okay? Don't worry, Manoj, you just revise whatever you know. Okay, so Malik is saying C, but he's not sure. Ayushi is saying B, Smiley is also saying B. Answer fast, students. Okay, so it's a war between B and C, but here the right answer is Paul Morrell. C is the right answer. Moving on to the next question we have A.G. Gardner. सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे A.G. Gardner का what was his pen name, ठीक है. Then A.G. Gardner has written his essays chiefly on personal matters, social subjects, political subjects or religious subjects. All right, answer fast, students. Okay, answer A or B. Okay, it's a confusion between A or B. Alpha of the Bluff. Very good, Vijaya. The pen name of A.G. Gardner is Alpha of the Bluff. चलिए अब आंसर करिए. इस क्वेश्चन में क्या होगा? Is it A, is it B, is it C or is it D? Okay, so most of you are saying B, and yes, you are absolutely right. He wrote chiefly on social subjects. Moving on to the next question we have, which of Huxley's novels has borrowed its title from a phrase occurring in Shakespeare's The Tempest? Students, कल के ही क्लास में I told the explanation of this question in detail. तो आज आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए. Is it after many a summer, time must stop, brave new world or antique hay? Let's see how many of you are able to answer. Okay. Manisha, I did not ask the full name, okay? I asked the pen name of A.G. Gardner, and it is Alpha of the Bluff. Okay, so
Yes, answer fast, students. Okay, so some of you are saying C, a few of you are saying A. Here, the right answer is Brave New World. Brave New World is a work which is written by Aldous Huxley, and he took the title from Shakespeare's The Tempest. आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगी मैं कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये फ्रेज किसके द्वारा बोला गया था टेम्पेस्ट में. सो इट वॉज said by Miranda, okay? Miranda in Tempest, she said it, okay? तो टेम्पेस्ट जो वर्क है शेक्सपियर का, उसमें मिरांडा ने ये लाइन बोला था जिसे फिर बाद में एल्डस हक्सले ने एज द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल यूज़ किया, ओके? Okay, moving on to the next question, we have Arcadia by Sir Philip Sidney. It is a collection of tales, pastoral romance, critical essay or poetic drama. Arcadia by Sir Philip Sidney is a collection of tales, pastoral romance, critical essay or poetic drama. Now see, all right, welcome Nishita. Okay, so please answer to this question. Okay, Malik is saying B, Smiley is saying D, Ayushi is saying C, Nishita is also saying C. C, D, B, okay, all right. So here the right answer is pastoral romance. Arcadia is a pastoral romance which is written by Sir Philip Sidney. आपको ये याद रखना है because Arcadia is an important work. Okay, moving on to the next question we have. Which poetess married the poet Tet Hughes? The options are Christina Rossetti, Sylvia Plath, Emily Dickinson or none of these. Let's see how many of you are able to answer. All right. So here all of you are saying B. Let's see what others have to say. Students, I want each one of you to answer, okay? The more you will participate, the more you will be involved in the session and the more you will be able to remember in the exam. So at least answer if you are there. All right, so all of you are saying Sylvia, and here the right answer is also Sylvia Plath. Students, Sylvia Plath जो थी, इनका बहुत ही कम एज में शी डाइड, ओके? हालांकि इनकी डेथ के बाद टेड पर आरोप लगे कि इनका इन्वॉल्वमेंट था उनकी डेथ में, बट फिर ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, ओके? सो शी डाइड बाय सुसाइड, ठीक है? शी सेट इन अ कार एंड शी covered herself in one room. She sat in one room, okay? She covered the windows and all, and कुछ गैस वैस वगैरह से she died, but she died by herself. इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं बहुत ही डिप्रेसिंग काइंड के वर्क्स हैं, विच बेसिकली टेल्स कि वो अपने जीवन में कितना अकेली और कितना लोनली, कितना डार्क फील किया करती थी. सो दिस वॉज सिल्विया प्लाथ, ओके? ऑलराइट, moving on to the next question we have. Robert Frost's first volume of poems is entitled, was first published in England. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स था उसका नाम क्या था?
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है. द आंसर विच यू आर गोइंग टू थिंक विल नॉट बी द राइट आंसर एंड आई विल टेल यू वाई. हियर द ऑप्शंस आर नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, a boy's will, New Hampshire or mountain interval. Okay, answer students. Answer fast. Simran, Manisha. Okay, Simran is saying Nishita, Vijaya, Sakshi, Ankan, Gayatri, Samriddhi, Shivani, Ronit. Answer everyone. Vivek, Smiley. Okay, Smiley has answered. Okay. तो 90% लोगों ने आंसर दिया है न्यू हैम्पशायर एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं जानती थी आप यही आंसर करेंगे बिकॉज व्हेन आई वाज इन योर फेज मैं भी हमेशा यही आंसर करती थी बिकॉज हमेशा जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद आते हैं और उनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स तो यही याद आता है. ठीक है, मैं सच में मैं हमेशा यही लगाती थी और मुझे फिर रिग्रेट होता था कि मैंने राइट आंसर क्यों नहीं लगाए. बट जो उनका फर्स्ट कलेक्शन था, फर्स्ट वॉल्यूम जो था उनका पोइट्रीज का, इट वॉज अ बॉयज विल बट नॉट द न्यू हैम्पशायर. प्लीज note this down, mark it down that A Boy's Will was the first volume of poems which was published in England. ठीक है? Yes. So sometimes it happens कि बहुत ज़्यादा confusing question होते हैं और आप जो लगा रहे होते हैं सही वही लगता है एक gut feeling से भी. But you just need to remember the facts here. Yes, okay. All right, again on the same question. Next we have, which of the undermentioned books has been written by Hobbes? Hobbes का सबसे important work याद करेंगे तो इस question का आंसर मिल जाएगा. Is it Utopia? Is it Leviathan? Is it Arcadia? Or it is Les Mortes d'Arthur? Okay, so we all know the right answer is Leviathan. Some of you pronounce it as Leviathan, some of you call it as Leviathan. Okay, so go with what you feel. So this is the right answer. अब आप ऑप्शन में जल्दी से बताइए, यूटोपिया किसने लिखा, आर्केडिया किसने लिखा और मोर्टे दी ऑर्थर किसने लिखा. डू फास्ट स्टूडेंट्स. All right, students, answer me fast. I asked who is the writer of Utopia, Arcadia and Les Mortes d'Arthur. Very good, Samriddhi. Utopia is by Moore and Sakshi, good. Arcadia is by Sir Philip Sidney. All right, next we have Samuel Langhorn Clemens wrote under the pen name of Saki, Mark Twain, O. Henry or none of these. Answer fast, students. Answer fast. All right, so most of you are saying Mark Twain. All right, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है
वो भी आंसर करें। चलिए, ये तो आपको पता है कि मार्क ट्वेन जो था उनका जो रियल नेम था इट वाज सैमुअल लैंघॉर्न क्लीमेंस, बट कौन जानता है ओ हेनरी का क्या नाम था? इट वाज विलियम सिडनी पॉर्टर, ठीक है। एंड साकी, इनका रियल नेम क्या था? ओके, साकी वॉज द पेन नेम. What was the real name of the writer? It was H. Munro. Then came Mark Twain. इनका था Samuel Langhorn Clemens. Okay. Yes, very good, Nishita. Saki is for good morning, Jyoti. So happy to see you here, but you have come so late. ठीक है, William Sidney Potter, very good. कल से from tomorrow I want you to see you at the first place, Jyoti. Okay. Then we have the line, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be, belong to T.S. Eliot's poem. ये एक बहुत famous question है. Okay, so it belongs to which poem? Gerontion, The Wasteland, Love Song of J. Alfred Prufrock, and Preludes. Let's see how many of you are able to answer. Okay, so most of you are saying C. Yes, C is the absolutely right answer. It is Love Song of J. Alfred Prufrock, where he says that I am not Prince Hamlet and neither meant to be. Then we have, in which country is the story of Othello is set? Is it Denmark? Is it Venice? Is it England? Or none of these? Answer fast, students. Answer. All right, so some of you are saying Venice. Yes, all of you are actually correct. The right answer is Venus. Okay. Moving on to the next question we have. Who has called Bacon the wisest, the brightest, and the meanest of mankind? Again, an easy but a very important question. Who has called Bacon the wisest, the brightest, and the meanest of mankind? Is it Dr. Jonson? Is it Coleridge? Alexander Pope? Or none of these? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए. Answer fast, students. I told you it is very confusing question. So some of you are thinking it's Dr. Jonson, but no, the right answer is Alexander Pope. Okay, please एक बार इसे recheck भी कर लीजिएगा. But yes, I'm sure it is Alexander Pope. Okay, please note it down जिनको भी इसमें confusion थी. Till then I'm reading all of you what you have to say. All right. Okay. So I told you it is Alexander Pope. ठीक है, इसे note down कर लीजिएगा. Moving on to the next question we have.
Moving on to the next question we have, who is the writer of Euphues? Very easy question. Is it Marlowe, Lilly, Greene or Peele? Answer fast. Some of you are saying B, some of you are saying Marlowe, even some of you are saying Greene. Alright students, so here the right answer is John Lilly. ठीक है, इन्होंने दो वर्क लिखे थे यूफियस के, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली एंड यूफियस एंड हिज इंग्लैंड. ओके, और इन्होंने अपने इन्हीं दोनों वर्क्स में एक राइटिंग स्टाइल डेवलप किया था जिसे हम यूफिज्म भी कहते हैं. ओके, so I hope that you all have understood well. Now if you have something to say, you can tell me in the comment section. Okay. All right, so this was it for today. I hope you guys enjoyed the session. You learned something at least, and I really think it was meaningful to conduct this. Okay, thank you very much. Have a very nice day and revise daily. रिवीजन इज़ द की. आपको जितना भी आता है आप उसे रिवाइज करिए, और अब क्योंकि कम समय बचा है तो ज़्यादा कुछ नया मत पढ़िए, बिकॉज उतना आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. तो जो भी आपको आता है उसे आप बार बार रिवाइज करिए, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम्स. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे. यस, ओके, वेलकम शिवानी, वेलकम स्माइली. ओके, लिटरेरी थ्योरी का सिमरन ज़रूर एक सेशन होगा. ओके, सो रॉनी दिस आस्किंग व्हाट इज़ अ सेफ स्कोर फॉर CUET PG टू गेट सम गुड कॉलेजेस. It also depends on the list of the good colleges you have in your mind. ठीक है, हर किसी की good colleges की list अलग होती है, बट अगर हम इंडिया में बात करें तो we see JNU, DU and BHU as some good colleges. ठीक है, तो आप ये देखिए कि उन पर्टिकुलर कॉलेजेस का कितना स्कोर जा रहा है फ्रॉम द पास्ट. ठीक है, फ्रॉम द पास्ट कट ऑफ लिस्ट. ओके, उसके बाद ही आप उसका एक एक्यूरेट आइडिया लगा पाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो एक लिटरेरी थ्योरी का MCQ सेशन ज़रूर होगा, एज सिमरन हैज़ आस्क्ड. एंड ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन. इट वाज नाइस मीटिंग यू.